Hello students, welcome back in your English class. Today we will see the next part of chapter 6 adjectives. I hope you are watching videos and try to understand. I have told you 3 rules to make comparative and superlative. Today we will see fourth rule. When an adjective ends with y, it means जो adjective word है वो y पर end होगा and there is a consonant before y. y से पहले एक consonant sound होगी. Change y to I, it means y को remove करना है, y को हटाना है और उसे I में change करना है. And add er and est to the end to form comparative and superlative. कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर ऐड करना है एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी ऐड करना है. लेट्स सी एग्जाम्पल्स. बिजी, हेयर बिफोर वाई इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी चेंज वाई इनटू आई. बिजियर एंड ऐड ई आर इन कंपैरेटिव एंड ई एस टी इन सुपरलेटिव. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. easy, easier, easiest. मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट. यहाँ मैरी का मीनिंग खुशी है. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. नेक्स्ट रूल नंबर 5. When adjectives of more than 2 syllable, as I told you syllable, then how many vowel sound in the sentence, in the word that are the syllable, form the comparative and the superlative by putting more and most before the positive. पॉजिटिव से पहले मोर ऐड करके हम कंपैरेटिव डिग्री मेक करेंगे, फॉर्म करेंगे एंड सुपरलेटिव से पहले मोस्ट पुट करेंगे इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, हेयर वी कैन सी ब्यूटीफुल. To make its comparative, we add more beautiful, and in superlative, we add most beautiful. Difficult, more difficult, most difficult. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Interesting, more interesting, most interesting. You can make very easily. Rule number 6. Here are some इरेगुलर कंपैरिजन. इरेगुलर इट मीन्स इनका कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि कैसे हमें ई आर या ई एस टी ऐड करना है. ऐसा कोई रूल इन पर अप्लाई नहीं होता है. सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, दैट इज देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव. इसका मीनिंग ये है कि जो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाई जाएंगी वो पॉजिटिव से नहीं बनेंगी बल्कि बिल्कुल डिफरेंट होंगी. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. वी कैन सी गुड, दिस इज पॉजिटिव डिग्री. बेटर, इट्स कंपैरेटिव डिग्री. एंड बेस्ट, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड. लिटिल, लेस, लिस्ट. मच, मोर एंड मोस्ट. More is comparative degree and most is superlative degree. Many, more and most. Both are similar, but here positive degree is different. Late, latter or latter. Here both you can write latter, L-A-T-E-R and L-A-T-T-E-R. Both words are correct. Latest and last. Old, older, elder, and the superlative is oldest or eldest. You can write both these words. Far, further, furthest. Up, upper. Upmost and uppermost. Out, outer, outest or outermost. You can write both words. Now let's see exercise related to these degrees of comparison, these positive, superlative and comparative degree in your book. This exercise is given on page number 32 in your English grammar book. Fill in the blanks with suitable adjectives
from the brackets use an article if necessary. It means अगर ज़रूरत हो तो आपको एक आर्टिकल भी यूज़ करना है. And you have to mention adjectives from the brackets. I have not heard the news. Here we have two words, latter and latest. How we can identify the sentence is in positive degree, comparative degree and superlative degree. Dear students, for this we can identify if before the adjective word there is the in the sentence. अगर sentence में blank से पहले या जो भी हम एडजेक्टिव वर्ड यूज करने वाले हैं उससे पहले द दिया गया है, इट मीन्स इट इज इन सुपरलेटिव डिग्री. जहाँ भी ब्लैंक से पहले द होगा या एडजेक्टिव से पहले द होगा, वो जो सेंटेंस होगा वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा. इट मीन्स वी हैव टू मेंशन हियर लेटेस्ट. सो आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज. सेकेंड, कविता इज मोर ब्यूटिफुल देन करीना. डियर स्टूडेंट्स, इफ after blank, after adjective word there is then, it means it is in comparative degree. यहाँ ये comparative degree में होगा. और before blank if here is the, it means it is superlative degree. This is the identification. You can easily identify that where is the superlative degree, where is the comparative degree, and if there is not the and then, it means that is in positive degree. Time is the best healer. Here again before blank the, it means superlative degree, and the superlative form of good is best. This is the latest edition of this book. Again we have the in the sentence, it means it is also in superlative degree. We put here latest. He is the gentlest person I have ever seen. Again we have the, it is in superlative. Which is the best of all these books? Again superlative degree. Iron is than any other metal. Here is than, it means we are comparing two metals. More useful. Here is than, so we put here more useful. Of all the boys in the class, he is the strongest. Again here is superlative degree because we are comparing all the boys with him. एक सिंगल बॉय के साथ हम सारे बॉयज को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है. स्ट्रॉन्गेस्ट. द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स को कंपेयर कर रहे हैं, सो वी पुट हियर यंगर. वरुण इज एन एबल पर्सन. हियर we can see that there is no comparison. यहाँ कोई comparison नहीं है, simply हमें adjective put करना है. So this is in positive degree and we put here able. English is than mathematics. We are comparing two subjects, English and maths. And as I told you, when we compare two things and two persons, then we put comparative degree. More difficult. The mango is the sweetest fruit of all. All fruits को compare किया जा रहा है mango के साथ. It means it is in superlative degree. Before adjective word here is the. We can easily identify this is in superlative degree. Sweetest fruit of all. Now exercise F. This is given on page number 33. Write the opposites of the following adjectives. Here are some adjectives. You have to write down their opposites. It means उनके विलोम शब्द आपको उल्टे जो हैं वो लिखने हैं. Brighter, it means dull or dark. Opposite of brighter is dull and dark. You can write both. You can use one. Dull, it means bright. Thinner का meaning होता है पतला, and here is comparative degree, so we give answer in comparative. Thicker, अर्ली, लेट. डीप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरा. शैलो, उभरा हुआ. चीप का मीनिंग होता है सस्ता. एक्सपेंसिव, महंगा. फार मीनिंग दूर. नियर मीनिंग पास. लोअर, जो नीचे हो, जिसकी हाइट कम हो. हायर, इट इज़ इन कंपैरेटिव. वी गिव आंसर इन कंपैरेटिव. हायर. हॉटेस्ट, दिस इज इन सुपरलेटिव फॉर्म.
we give answer also in superlative. Coldest, active, inactive. Heavier, it means भारी, this is in comparative. Lighter यानी हल्का. Poorest, richest. Inferior, inferior का मीनिंग होता है निम्नतम, जो सबसे ज़्यादा नीचे हो. एंड सुपीरियर, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो. हार्डर, सॉफ्टर. स्मॉलर, it means bigger. Bitter, it means sweeter. Sorry, the opposite of bitter is sweeter. Eldest, youngest. High, low. Ugly, beautiful. Tallest, you can write smaller, you can write shorter. Both are correct. So these are the opposites of these these adjectives. You have to mention these exercise in your book, and rules you have to write in your notebook. Your work should be neat and clean. I hope you have understand. Thank you and have a nice day.